All right, good evening, everybody. So I think we're still waiting on a few more people. Hi, Siddhant. Hi, Vedant. All right, super. Just waiting for another couple of minutes so that we can have the entire, audience, so that they can not miss the initial bits. Ah, yes, thank you very much. Already in Diwali mode. So is the market. Fireworks here and there. Hi, Madhav. Hi, Hardik. Hi, Anoop. Excellent. Hi, Viraj. Hi, Keshav. Hi, Shreyesh. Brilliant. Excellent. All right. So, can you guys hear me? Please type yes if you can hear me, by the way, just so that I know that you can hear me. All right. Meanwhile, we're just waiting for other people to join in. Super. We can hear ourselves. All right. Brilliant. Brilliant. Let's begin. Let's begin. I think people are going to join in a bit, but why to waste time? All right, guys. So, we've got about 39 stock picks, more or less, and they are chosen on the basis of, daily entries and weekly entries and all that. And what you can do is, so you can, while I discuss all these stocks, I'll tell you a plan how to, I shared this last time as well, have a buying list, have a selling list, so that you can actually take a call whether to buy or sell when you see how Monday opens. All right, because it is going to be a little tricky. Okay, so let's start scanning the list and then we'll go through. Of course, TradingView is acting a little funny with commodities. We'll see if we have enough time. We'll touch commodities today as well, because commodity is going to give you a couple of good trades as well. Apart from that, we of course are going to discuss Nifty and Banknifty in detail. And हम of course stocks की बात करेंगे. जो हम stocks से बात करते हैं, we're going to talk about all the stocks that we have in the purple list today, which is basically giving you an opportunity. I have about 20 roughly, I think, if I'm right, 20 to 15, not 20, I think I'm talking about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15. Yeah, about approximately 20 stocks that we can discuss for investment as well. They're at a setup or they're about to make a setup, and we can probably benefit out of it as well. So let's see, let's शुरू करते हैं, देखते हैं इसका क्या end result होगा. So Aarti Industries, I think this was in the list because it is at EMA and it has a bearish divergence in the hourly chart. So it's a daily with the trend re-entry trade, but it is also at support. So I think I'm going to remove it because I want to select really good trades which will give you an opportunity which you can actually benefit from next week. So ABB India, you can see it's at weekly EMA. You had a bullish divergence. ये हमने last time भी list में रखा था और ये फिर eventually बढ़ा. Now we have a new monthly CPR, narrow CPR इसके ऊपर चला गया. So अगर ये with the trend trade है और ये monthly CPR के ऊपर बंद हो गया है, so if there's a follow through, this could be a good trade on the upside. ठीक है, and you can see how the price has moved. Now of course जो भी ये देख रहे हैं, आपको ये मैं बता दूं कि अगर earnings है, please keep an eye on the earnings. हम earnings वाले डेट पे ट्रेड नहीं करते हैं या उसके एक दिन पहले ट्रेड नहीं करते हैं. We avoid trading because there's a lot of news factor in the price. जो हम चाहते हैं थोड़ा diffuse हो जाए and then we are happy trading that. So ABB in that case is somewhere set like that. I think we can have a better setup as well, but let's keep it anyway. Now, Abbott India, again, you can see went up, corrected, moving sideways now. You can see this, right? Fall sideways, bullish divergence, 012, 012.
It's at 0.12, like there's a bullish divergence here, then 0.12, and now closing above the CPR. Now, of course, I don't know how good a volume is in this stock if you're trading in futures, but अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर follow through में आपको trade मिल सकता है, आप ले सकते हैं. Thursday को इसका data है, so I mean results है, so be a little careful, but with the trade setup is there. All right, then we do Aditya Birla Fashion. There is a bearish divergence in the weekly chart. Downtick हुआ, उसका low नहीं टूटा, अभी भी downtick है. अब इसका low is very near, right? This week का low भी टूटने से we are pretty much in. Now daily chart, beautiful setup. In fact, आप देख सकते हैं यहाँ पे CPR, ये जो black CPR है early chart में, this is a weekly CPR, is going to change into a very narrow CPR. In fact, I'm going to put my alert here itself. And अगर आज का लो टूटता है, I think with the trend on the downside could be a decent setup here as well. You know, so Aditya Birla Fashion could be a down, with the trend down sell. Of course, the results are on Thursday, so if you get an opportunity before that, probably the best idea. So इतना जोर से गिर के थोड़ा सा correction ऊपर की ओर, and then फिर because there's a bearish divergence in the 0.12 as well, there is a good possibility for this on the downside. So you can, as I said, you can segregate your list. आप list को divide कर लो, एक upside और एक downside बोल के, ताकि आप जब trade करो तो आपको पता रहे कि morning में momentum कैसे, आपको किस direction में trade करना है. Then you have Ambuja Cement. Ambuja Cement is in the list because there's a bullish divergence in the daily chart, so you can see this, right? अब दो चीज हो सकते हैं, या तो ये trend reversal है, so basically क्या होता है, ऊपर ऊपर higher highs, higher lows, then suddenly lower highs, and then suddenly there's a level of there's a neckline, right? So अगर ये टूट जाता है नीचे की ओर, then it's gone. But nonetheless, there's a bullish harami which is an uptick. आज इसका high नहीं टूटा अच्छे से, but you do have a narrow CPR, narrowish CPR next week as well. And अगर इसके ऊपर या gap up या ऐसा कुछ खुलता है, then you can probably take a call. Now I can, आप मेरे alerts देख रहे हो पहले से चले आ रहे हैं, so मैं इस alert को probably यहाँ पे या मंथली CPR के ऊपर, अगर आप मंथली CPR के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तब, या आप वीकली CPR के ऊपर, so somewhere here, because अगर गैप अप खुलता है देन आपको बढ़िया सेटअप मिल सकता है, but it has to open with a with a decent power, and then आप देख सकते हो कि अगर वीकली हाई भी टूट गया, then also it is a good opportunity to enter. So वीकली हाई पे भी आप एंट्री कर सकते हो if you want to delay your entry and add with more confidence. So Ambuja Cement is in the list because of that. Ashok Leyland again at EMA trailing highs चल रहे हैं. At EMA there is a bullish divergence again in the daily chart, and you can see it is taking resistance from the EMA. Now of course this is not the worst candle, it's just a black candle. ऊपर खुला नीचे बंद हो गया, fair enough. आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक गैप भी था अर्ली चार्ट में, so it's not exhausted either. So अगर ये गैप अप खुलता है, then again it has a narrow CPR. अगर गैप अप खुलता है and sustain करता है, because आजकल मार्केट्स में पिछले 2 दिनों से क्या हो रहा है, ऊपर खुल रहा है लेकिन मार्केट गैप सस्टेन नहीं कर पा रहा है. So that is when you can take an up with the trend position. But again, probably best if you buy above today's high, which is also today the week's high. So if you want to put like an alert here and then take a call, I think that'd be a pretty good idea. ठीक है, again segregate your list जैसे मैंने बताया, and फिर आप करो जो करना है. Bajaj Finserv is bearish divergence on the weekly chart. It's falling. आज हमारे पास trade था, you can see bearish divergence on the early chart, and suddenly it started falling. I think somewhere here 1572, somewhere here you could have entered, and ये जाके S1 पे रुक गया. Now of course we have another well, not a narrow weekly CPR, but we do have a CPR which can help you enter this again if possible. Now if you think the stop loss is too big, just avoid taking a trade at that level. All right, so that's Bajaj Finserv. I think ये immediate trade नहीं है, तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ. We can probably discuss it later during the week. Burger Paints में आप देख सकते हैं वीकली में piercing pattern बनाए, not the best piercing pattern, but daily में एक bullish divergence बनाए. This is in the list because यहाँ पे bullish divergence बनाए. I think इसका result था नीचे खुल के फिर engulfing bull बनाए, narrow weekly CPR है, and 0.12 का possibility है. So this could be a pullback, and you could expect the prices to go higher. Now you can take a call. You want to buy above the narrow CPR in the daily chart, you could do that as well, but there is a possibility. तो आप देखो, अगर high gap up खुलता है या आपको ऐसा कोई opportunity मिलता है, only then take a position in this. All right.
Then we move to Bharat Forge. Bharat Forge, again, at weekly, you don't have a daily divergence. So to create that, you do have a narrow CPR next week, and you see there's a big fall and a very minor correction. ठीक है, so ये हो सकता है कि ये वापस नीचे की ओर जाए because there is a narrow CPR and you can take advantage of this. So a lot of stocks like this has come up. आप देख सकेंगे कि बहुत सारे stocks हैं आज के scan list में ऐसा setup पे. So Bharat Forge, again, you can put an alert here, you know, but ऐसा नहीं करना कि बहुत सारे alerts लगा दे और टिंग 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 बजते रहे and all that, but Bharat Forge can be watched as well. Then you have Cipla. Cipla में CIP है. CIP पे यहाँ पे bullish divergence था. Last week हमने यहाँ पे discuss किया था Friday को कि ये bullish divergence है, अपटेक है, अगर इसके ऊपर जाता है या CPR के ऊपर जाता है, then this could be a good re-entry trade. And वैसा ही हुआ. This seems like a good re-entry trade. Of course, markets have not, or Cipla has not moved with that much strength, but you do have a narrow CPR here again. Again, अगर आपको opportunity मिलता है या ये EMA तक pull back होता है थोड़ा and then फिर ऊपर जाता है, that could be also a decent opportunity. So you can probably use maybe add an alert here and, you know, use this as well. There's a decent setup as well. Now Coforge as well, ये भी हमारे previous list में था. Weekly at EMA there's a triple bullish divergence और हमने बोला था कि हाँ इसका uptick हो चुका है. That is a Friday. इसके ऊपर follow through नहीं आया. In fact Wednesday को आया था and Wednesday को you can see that यहाँ से फिर ये ऊपर बढ़ गया, R1 पे जाके रेजिस्टेंस लिया. Again we have a narrow CPR and hopefully if the market momentum is on the bullish side, तो हो सकता है कि ये narrow CPR का सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए. But nonetheless मार्केट का सेंटिमेंट कैसा रहेगा या कैसा होना चाहिए, ये हम जब निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे तब हम उसको डिस्कस कर लेंगे. Then you have Cummins India. Cummins India have a very shady bullish divergence in the weekly chart also. अगर हम इसका monthly chart खोलते हैं just because आज end of month analysis भी है, तो monthly chart blue EMA पे है, which is 11 EMA for me, and weekly पे आते हैं वापस. So there are decent candles as well. There's a doji, there's a hammer here. यहाँ पे daily chart में you see there was a bullish divergence here. Now this could be your 012. If this is a 012, then you're expecting the prices to go higher. Now if you're expecting the prices to go higher, then you want the candles to close above the monthly CPR or break. You know, there is a wide weekly CPR, so I suggest, and if you agree with me, please type I do, that we tend to avoid trading if there is a broad weekly CPR. If you agree with me, please type I do, so that, you know, I understand that we are on the same page. So you could probably wait for another week or monthly CPR के ऊपर बंद होके कर सकते हैं इस 0.122 का risk लेके. That can also be done. But again, as I said, the momentum has to be on the upside of the broader market. Then we come to Deepak Nitrate. Deepak Nitrate में हमारे पास again similar situation. Now of course आप ये देख सकते हो कि if there is a bearish divergence in the hourly chart, of course you can avoid it. But there is a probable 0.1. Well, there is not a probable. There is a 0.12 here, and 2 पे भी यहाँ पे, you know, it's a good gap up and everything. तो अगर ये 3 तक जाना है तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं और ये हमारा टारगेट हो सकता है roughly around this level, and this could, it is possible, right? So of course again momentum and everything plays an important role. So if you're interested in trading this stock as well, so this could be your plan of action. Again, इसका earnings आप देख लो, earnings is on Tuesday, so be very careful. Maybe not the best idea to trade. In fact मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि Monday Tuesday हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे. Then we have Escorts. Escorts weekly above 70 RSI, of course suggests कि आपका ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है. EMA पे आ रहा है, यहाँ पे एक बहुत शेडी बट डाइवर्जेंस बना हुआ है. रिजल्ट आज है, लेट्स सी मंडे कैसे रिएक्ट करता है. अगर ये ऊपर की ओर रिएक्ट करेगा या ऊपर की ओर जाएगा, देयर इज अ नैरो वीकली CPR एंड यू कैन टेक एन एडवांटेज ऑफ दिस. सो हम इसको लिस्ट में रखेंगे. अगेन इट ऑल डिपेंड्स हाउ द मार्केट रिएक्ट्स टू द रिजल्ट. Exide Industries, same thing here. It's at weekly EMA. There is I think a piercing pattern here with, well, this is not a divergence here, right? And अगर हम देख रहे हैं, देखो ऐसे जाके फिर EMA के नीचे जाके EMA से फिर ऊपर टेस्ट करके फिर नीचे.
So this seems like you can get an with the trend trade on the downside. There is a bearish divergence in the hourly chart also. There's a narrow CPR. So अगर in fact मैं या तो वेट करूंगा कि ये ऊपर खुल जाए, आज का रिएक्शन कैसे होता है, अगर ऊपर की ओर खुलता है तो फिर I'll plan it after the monthly CPR के ऊपर क्लोजिंग हो जाए, उसका फॉलो थ्रू हो जाए. I'm happy to plan that way as well. लेकिन अगर ये गैप डाउन खुलता है, इनफैक्ट मैं अपना CPR के नीचे इसका अलर्ट भी लगा दूंगा कि अगर ये नीचे की ओर खुलता है, then I'm happy to take a trade on the downside also because there is a with the trend trade. ठीक है. Now then we come to GMR Airports Infra, which is at weekly EMA. There's a very shady divergence, but it is at EMA and there is there is no divergence. I think this from the last day's list. So इसको हटा देते हैं, इसमें कुछ नहीं है. Let's excuse myself from that stock. Grasim Industries weekly at EMA, not the best rejection if I combine these two candles. Midpoint, yes, okay. Divergence नहीं है यहाँ पे, so of course आप अगर if you can see, goes up, falls, goes up, deep fall, goes up, deeper fall expected maybe. यहाँ पे confusion candle है, spinning top बना हुआ है, narrow monthly CPR है of course. यहाँ पे I have a with the trend bearish divergence in the early chart with a narrow CPR. So again हम CPR का low पे रख सकते हैं या candle के low पे रख सकते हैं, जैसा हमें मन. So I can put an alert below the weekly CPR and take a call here as well. Or you can go through the list if it opens at pre-opening. अगर आपको लगता है कि gap down खुल गया या आपको अच्छा opportunity मिल रहा है, then you can take that call as well. फिर आपका आता है HDFC Life Insurance. HDFC Life Insurance हमारे green list में था, if you remember. Breakout, CIP goes up again at support. Then you have a bullish divergence in the daily chart. Now this is actually pretty good, but the only thing that's bothering me is the prices are not going above the monthly CPR. So again, if the momentum is good और अगर monthly CPR के ऊपर जाता है, तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये ऊपर जाके बंद हो जाता है, then you can expect the prices to go higher. Remember, बंद होना बहुत जरूरी है उस daily candle को. But apart from that, there is weekly CPR is not too narrow, and I think I would like to take an up move if possible. I don't have a bearish divergence in the early chart. Then we have Hero MotoCorp. Hero MotoCorp में weekly में bearish divergence, so you're looking to sell. Of course, you can see the monthly CPR candles के through जा रहे हैं, earnings आ चुका है. So either it goes back up here, tests and then falls, like something like that, or it gives you a trade below the narrow weekly CPR as well. So either way, you can probably, if there is a follow through or gap down, you can take a trade here as well. HUL. Now HUL, a weekly engulfing bull, decent candle. Daily chart mein, this is very strange. You have a bullish divergence here, and then you have a 0-1-2 kind of setup, which is a very good, it looks like a very good retracement. Okay, 78.6 or 78.6 pe I had a bullish divergence in the early chart also, so which suggests pretty good things. Gap up, and this move on the upside is also pretty good. So I think if you like trading this stock, it is closed above the monthly CPR also, and this is a 0-1-2 stock, which basically means that if you're aiming for a target, it could probably go till here. All right, and I think you should keep this in your list as well. Again, आपको ये चाहिए कि momentum ऊपर की ओर रहे. India Bulls Housing weekly आप देख सकते हो, weekly bullish हरामी बना हुआ है यहाँ पे at EMA. There is a bullish divergence here as well. Now India Bulls Housing में tricky ये है कि bearish divergences बने हुए हैं काफी early chart में, and अगर gap down खुलता है, अगर momentum नीचे की ओर है तो नीचे जाता है. मुझे लगता है maybe ये 0-1-2 बनाने के लिए नीचे आएगा, whether it is because of the divergence with the trend daily trade, or because it just has to or something. But I think you might get an opportunity not this week but the next week. But anywho, if it closes above the CPR, you can take a call then as well. So हमें bullish trade को ढूंढना है, लेकिन I think it might give you a 0-1-2 and then give you a trade maybe latter half of the next week. Then you have ICICI Pru. ICICI Pru में bullish divergence है, at EMA है. Now at EMA you see there are black candles, right? So maybe it comes here and then goes back up. So इसके लिए क्या होगा, आप बहुत simple है, you can wait for this gap. You can see this gap, right? आप इस gap को exhaust होने दें. I think the best
area to enter the stock would be excuse me then. Okay, till then हम बाइंग की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि गैप डाउन खुला है और गैप डाउन बार बार टेस्ट होके नीचे गिरे जा रहा है. ऑलराइट, then you have IDFC First Bank. IDFC First Bank, of course, I don't know why this is in the list either, because it's not, there's no bullish divergence and nothing here, so let's get rid of that. No wonder I have so many stocks today. Indian Hotels, that is at EMA, but up agar dekho iska, let me remove drawings. Okay, so fall comes back to EMA. CPR here, at CPR you have a bearish divergence in the hourly chart also. So if it opens gap down or something, or if it breaks the lows of previous 2 days, I think this is a good selling opportunity as well in Indian Hotels with the trend trees. बहुत सारे with the trend trees. Infosys at weekly EMA, there's a bullish divergence here on the daily chart. छोटा सा bullish divergence you can see here, right? And it has kind of opened gap up today. Excuse me, मैंने ये notice किया कि tech stocks काफी ऐसे ही setups दे रहे हैं, and I think maybe next week onwards we can start with a sectoral analysis first and then go through the stocks. I think that could be a better idea. But monthly CPR बहुत wide है. I don't like trading a wide CPR, चाहे वो month में हो चाहे week में हो कहीं भी हो, and weekly CPR भी wide है. So I think we can avoid this stock also. हटा देते हैं. Kotak Bank. Now this is surprising. Last time we had a monthly bullish, weekly bullish divergence here. It went up, and again Kotak Bank has a weekly bullish divergence. इसको हम देख सकते हैं month में कहाँ पे है. Nothing special here. So we have a weekly bullish divergence and we have a daily bullish divergence here as well. The only thing left is going above the monthly CPR. You do have a narrow CPR here. You do have a gap here, so you can probably use this. So here आपका gap up. ये रहा आपका narrow CPR. So if it opens gap up or something of that sort, you could probably take advantage of that. However, you need to see the momentum कि किस तरफ है, because ये weekly divergence का high टूटना जरूरी है, which is above the monthly CPR. So you could, to be safer, you could probably add alert here above the high of the weekly candle, and then use the monthly CPR as your stop loss as well. That can be done as well. All right, then we have Laurus Labs. Laurus Labs हमने last time discuss किया था. Weekly में bearish divergence है और अच्छी जगह पे bearish divergence है. Daily में ये breakout हुआ, so you can see this, right? Point of interest, breakout, gone to test the moving averages. Now CIP would be testing this level here, but ये EMA पे है and there is a bearish divergence in the hourly chart. Now ये हमने last time भी decide किया, discuss किया था कि ये यहाँ तक आएगा and then there's a possibility it will fall. And this is what the plan is. There is a narrow CPR. You would like to put an alert here and probably take a call on the stock as well. So this is a decent setup as well. Then we have Mindtree. Mindtree, weekly EMA, daily bullish divergence. As I said, tech stocks कुछ ऐसे ही setups है. Monthly wide CPR, not a problem. We'll go to narrow weekly CPR. And शायद अगर ये follow through देता है, then maybe you can take a call on the buying side. I think I would be more comfortable above the high of the weekly candle. Okay, either way, that is the setup, so I don't want to take it away from you. LT, I think L&T Technology Services, this is at EMA once again. There is no divergence. It can come back for a divergence. Monthly is wide CPR. It might move sideways. ये re-entry trade at daily EMA with bearish divergence, the hourly chart वैसा बना हुआ है. एंड हो सकता है ये स्टॉक पहले नीचे गिरेगा क्योंकि ये बहुत अच्छा भी करेक्शन नहीं है. सो करेक्ट एंड देन फॉल. सो अगेन मोमेंटम हैज टू बी देयर. देयर इज अ नैरो सीपीआर. आप इसके नीचे इसको अलर्ट लगा सकते हो और इसको ट्रेड कर सकते हैं बिकॉज आपको दिख रहा है कि ये छोटे 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 कैंडल्स करेक्टिव वेव के टाइप के कैंडल्स हैं. फिर हम MFSL पे जाते हैं. Now this is very interesting because this is breakout. This could be like support, test, CIP because there is a bullish divergence here. यहाँ पे था और ये इस बार जो टिकअप हुआ आज का जो हैमर है, दिस कुड बी अ 0-1-2 काइंड ऑफ अ सेटअप, राइट? एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू गो हायर. 0-1-2 में आर्ली चार्ट में यू कैन सी देयर इज अ बुलिश डाइवर्जेंस एंड यू कैन एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू गो हायर. सो लेट मी पुट एन अलर्ट हियर and you're expecting the prices. Well, that is what the plan is anyway. So hopefully that works as well. So MFSL is a decent setup here. MGL, again, there is a gap up kind of a situation here, but
daily hourly bearish divergence at daily EMA, and you expect the prices to fall further. So this was a big fall, maybe a correction and then fall. But you know, only trade if you like such stocks. Don't fall in love with a stock कि मुझे ये trade करना जरूरी है, जिसमें सबसे अच्छा setup है आप वो trade करो. जरूरी नहीं है आपको हर चीज trade करना जिसमें setup हो. So MGL अगर आपको ठीक लगे तो कीजिएगा, वरना I'm not a big fan of the stock right now. National Aluminium, same thing. I don't think weekly has anything to do with it, but daily does have a at EMA bearish divergence kind of a setup, and there is a narrow CPR. You could probably put an alert there and take a call as well. Again, earnings का ध्यान रखिएगा सर. अगर 10th November Friday तक आप hold कर रहे हो and there's an earnings there, then you know, just be careful. Then you have OFSS. You have at EMA the couple of dojis for the couple of weeks, and you have a bullish divergence in the daily chart. Now, once again, of course, there is a narrow CPR, but there is a you could probably use this. Okay, let me just straighten it up. Okay, so you probably want to wait for the breakout of this kind of a level, or up gap up या ऐसा कुछ हो तो उसको भी use कर सकते हो. But then this is the setup that we have. You could also put an alert above the high of the weekly, which is above this blue resistance line that I've drawn. Then you have ONGC. I don't think I've put it here. ये add हो गया होगा. Then we have PI Industries. PI Industries is a very shady bullish divergence in the weekly chart. All right, and the price have closed above the narrow or single line CPR in the monthly chart today. Now, earnings on Wednesday, so be a little careful. You have a wide weekly CPR, so maybe that next week it's not going to do anything or give you a 012 first and then do something. ये सब हो सकता है, so be careful. But there is a kind of a setup here, so उसको watch list में जरूर रखिएगा. PVR may it's still, you know, with the trend on the downside, so you know, fall correct, correction में there's a bearish divergence here, narrow CPR. If you put your alert below the narrow CPR, maybe you get an opportunity here. जो setup है वो है, अगर हो सकता है ये correct और ऊपर आए पहले और फिर आपको फिर कुछ बना के दे, तो nonetheless we'll just wait for the alert to trigger. SBI Life Insurance. Now this is very strange because I don't know if it's such a good setup or it is just fooling the market, you know. So इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखो weekly में divergence है with a 012 in the weekly chart में, daily में bearish divergence है. You can see this here as well, right? And जब daily में bearish divergence है, monthly wide CPR है, लेकिन हमारे पास next week narrow weekly CPR है. इस बार wide था, इस बार weekly narrow है. Maybe this can give you an opportunity on the downside, and this could actually be a decent trade. So SBI Life, surprisingly, could be a decent setup. फिर हमारे पास आता है टाटा कम्युनिकेशन. टाटा कम्युनिकेशन में आप देख सकते हो ये ब्रेकआउट था, ये फिर चेंज इन पोलैरिटी हो रहा है, इन दिस केस सपोर्ट हो रहा है, लेकिन although the weekly candle is pretty good, you can see there's a bearish divergence in the hourly chart with at daily EMA. So for me, for this to go higher, I think if it comes down and then goes higher, it's much better. Nonetheless, again, CPR and all that will play a role. और लेकिन इसका जो move on the upside है बहुत अच्छा है. So मैं इसको मतलब sell करने के पहले भी थोड़े बार सोचूंगा कि मुझे sell करना है कि नहीं. You know, should I will think about it. And then you have Vedanta. Vedanta has a weekly bullish divergence, and finally, you know, a nice big candle. Of course, follow through का जरूरत है. आप देख सकते हो यहाँ पे daily chart में भी there is a 012. So if I draw my 012 का target, so probably somewhere here. Now before that comes, आप इसको plan में रख सकते हो कि if it comes till the EMA, because weekly wide CPR है, so if it comes till the EMA and then gives you an opportunity on the upside, that would be much better. ठीक है, क्योंकि अभी आपका risk reward बहुत favorable नहीं है, and of course results आ जाएंगे तो उसका reaction आपको Monday मिलेगा. So that's about it. I think 39 था, 32 stocks, that is what we ended up with. Now before I go on to the investment stocks, ठीक है, हम क्विकली निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करना चाहते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि मार्केट कैसे पॉइज्ड है.
क्योंकि हमने बार बार डिस्कस किया है, उप्स सॉरी, क्योंकि हमने बार बार डिस्कस किया है कि इट सीम्स दैट निफ्टी इज गोना डू समथिंग इंटरेस्टिंग। सो हम एक काम करते हैं, फ्रेश इसी में खोलते हैं निफ्टी स्पॉट का चार्ट। पहले हम स्पॉट खोलेंगे, इधर डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में, है ना। सो हमारे पास ये सिचुएशन है, यहाँ पे डाइवर्जेंस बना था, आया, पुल बैक हुआ एंड देन फॉल। दिस कुड बी अ करेक्शन, राइट, बट दिस कुड ऑल्सो बी, इज दिस अ CIP, दैट इज अनदर थिंग। ब्रेकआउट होके क्या ये CIP है? बट CIP पे मेरे पास अगर बुलिश डाइवर्जेंस होता, देन इट वुड हैव बीन अ मच बेटर सेटअप। सो दिस इज अ निफ्टी 50 स्पॉट चार्ट। स्पॉट चार्ट में ट्यूसडे को हमारे पास ये डार्क क्लाउड कवर बना था, जो कि एक आर्ली चार्ट में अपने आप में एक यू नो चेंज इन पोलैरिटी है। इफ आई जस्ट नैरो इट डाउन हियर, समवेयर हियर, ठीक है, और ये नीचे आया एंड देन आज फिर ऊपर गया। लेकिन तब तक हमारे पास आवरली चार्ट में बेरिश डाइवर्जेंस नहीं था निफ्टी में, जो कि आज हमारे पास है। सो देयर इज अ गैप अप नाउ। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर प्राइसेस गिरना होता है ना, अगर मार्केट को गिरना होता है, तो ये गैप जो ऊपर खुला है, ये गैप डाउन से एग्जॉस्ट हो जाता है। सो आई डोंट नो अभी मार्केट्स ग्लोबली क्या चल रहे हैं, अभी तो बुलिश ही चल रहे हैं, तो आई डोंट नो क्या वो होगा, मुझे नहीं पता, बट जनरली ये होता है। नाउ लेट्स से यहाँ पे गैप डाउन नहीं होगा और ये ऊपर की ओर ही जाएगा, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी बिकॉज अभी तक EMAs टच नहीं हुए हैं, ठीक है। नाउ वी कम टू the Nifty future chart, because this is what we generally analyze when we are trading. So you can see here divergence goes back up, down. Now let's look at the monthly chart quickly. Monthly chart में bearish divergence है with tick down. Of course it needs a follow through, मतलब इसका लो टूटना जरूरी है। अब हम वीकली चार्ट में आते हैं। वीकली चार्ट ठीक है, रिजेक्शन है, नो प्रॉब्लम, बट you see here we have a bearish divergence in the hourly chart. Not only that, there are few things that you need to take care of. I'm not saying the market is going to crash or anything. मेरे को नहीं पता अभी क्या होगा, क्योंकि मैं हर रोज बैठता हूँ कि अब आज ये CPR के नीचे जाएगा तो मैं सेल करूंगा, आज करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन क्योंकि अब मेरे पास डाइवर्जेंस है, दो अपॉर्चुनिटीज हैं। पहला तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट वेयर अगर आपके चार्ट में कोई भी टाइम फ्रेम में 3 कंसेक्यूटिव गैप्स होते एक ही डायरेक्शन में, so there is a possibility that the market changes the trend or it starts falling. All right, how many of us know about this? Please type yes if you do, and if you back tested, if you've seen this happening, type yes. Okay, second, sorry, wrong line. ये हमारा चैनल है, लेट मी जस्ट एडिट दिस बिकॉज मैं इसको CPR की तरह यूज कर रहा था, so that is okay. Okay, so now you can see that there are 3 consecutive gaps. It's on the edge. There's a bearish divergence. There's a narrow CPR here in the weekly chart. So I'm of course I'm going to put an alert here, and you can see the daily candles, right? Rejection, shooting star, and at a decent level at CPR. So it's not closing above the CPR. मैंने लास्ट टाइम भी यही बोला था कि मैं तभी बाय करूंगा जब मंथली CPR के बाद क्लोजिंग होगा, एक्सक्यूज मी, और उसका फॉलो थ्रू होगा, जो अभी हो नहीं रहा है। एंड मुझे लग रहा है हो सकता है यहां से ये प्रीवियस लो तक वापस एक बार फॉल आए, बट उसके लिए ये हमारा इंफॉर्मेशन है, उसके लिए कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है, व्हिच इज द एंटायर प्लान हियर। नाउ इफ आई ओपन माय निफ्टी चार्ट, you see I have a 15-minute chart open also, which basically has a weekly CPR, a 15 daily CPR and the plan itself. So अगर हम अपने प्लान में इसको थोड़ा सा फ्यूचर पिवट लगाते हैं, दिस इज योर आई थिंक डेली CPR, है ना। इसका मतलब कल CPR यहाँ रहेगा, उसके नीचे हम ऑलरेडी हैं, ठीक है। S1 के नीचे जाने से और अच्छी बात है। अगर हम यहीं पे एक बार वीकली CPR लगाते हैं, सो आप देख सकते हो वीकली CPR यहाँ पे, अगर ये शायद S1 के जगह पे है, जो डेली S1 के आसपास, अगर इसके नीचे जाता है, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल। हाउएवर
let's not make hasty decisions. It has to open below. अगर gap up खुल जाता है या कुछ होता है, then we don't have anything to do unless it breaks the weekly CPR properly and follow through. ठीक है, so ये हमें ध्यान रखना है. ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस था. तो जैसे मैंने बोला बुलिश, क्या मेरे पास क्या है बुलिश करने के लिए? मेरे पास कुछ है ही नहीं निफ्टी के चार्ट में जिसमें मैं बोल सकूं कि मुझे बाय करना है. या कोई मुझे बोल सकता, डू यू ऑल अग्री? प्लीज टाइप यस इफ यू अग्री कि मेरे पास निफ्टी में बाइंग एनालिसिस में बाइंग के लिए कुछ नहीं है. डू यू ऑल अग्री विथ मी कि मुझे डाउट भी होना कि यहाँ पे कुछ बना है, यहाँ पे डाइवर्जेंस है, राइट? देयर इज नथिंग दैट आई कैन ऑफर हियर. ऑलराइट, नाउ वी कम टू बैंक निफ्टी. इसी चार्ट में, इसी लेआउट में खोलते हैं बैंक निफ्टी को और इसको समझने की कोशिश करते हैं. लेट मी रिमूव ड्राइंग्स. मंथली चार्ट, ऑफ कोर्स देयर इज अ बेरिश डाइवर्जेंस, वो कंफर्म भी हो गया था. आई थिंक द लो वाज ब्रोकन हियर समवेयर. फर्स्ट फ्यू मंथली चार्ट में पहले कुछ दिन बढ़ सकते हैं, फिर गिर सकते हैं, ये भी हो सकता है. वीकली चार्ट में हम आते हैं. वीकली चार्ट में लुक एट दैट, देयर इज अ बेरिश डाइवर्जेंस हियर, देयर वाज वन हियर, टेस्टेड, फेल, दैट्स योर नेकलाइन और डबल बॉटम, double top, sorry, right? This price can come till here 43,700 के आसपास, जहां पे ये है 600 वहां तक ऑलरेडी ऑलमोस्ट आ चुका है, right? Like a very 200 points left approximately. Weekly chart is not bullish, just a bullish candle this week, which is okay if there's a correction as well. So for example, यहाँ पे जब गिरता है तो एक करेक्शन आ सकता है, फिर गिरता है, फिर आ सकता है, फिर गिरता है, राइट? ऐसे होता है. So अगर ये खाली करेक्शन है, then you can see the prices have come till daily EMA, beautiful doji, couple of doji, confusion candles, whatever, but they are very good reversal candles also. And Bank Nifty spot chart में, again we don't have the best bearish divergence, but again 1, 2, 3 consecutive gap ups. ठीक है, 3 consecutive gap ups. ये हमारा corrective wave है. So maybe it comes till here, which is 43,680. See the value here, 43. maybe यहाँ तक आके फिर यहाँ तक आए, फिर डाइवर्जेंस बनाए, फिर सीपीआर बनाए, मे बी नेक्स्ट वीक नहीं देखे, नेक्स्ट वीक दे, वो भी हो सकता है अपॉर्चुनिटी. बट देयर इज नथिंग दैट कैन टेल मी स्टार्ट बाइंग. अभी तक ऐसा कोई सेटअप नहीं है जो मुझे बोलेगा कि बाइंग करना शुरू करो. ये देखो, अगर मैं डेली चार्ट में आपको, ये हमारा सपोर्ट लेवल था जो कि यहाँ पे टूटा था, ये वापस आया चेंज इन पोलैरिटी के लिए. चेंज इन पोलैरिटी में हमारे पास ये सेटअप है, right? This is why I'm saying that I've got nothing bullish. Now let me open a future chart. Same setup, right? Same thing here as well. At EMA we have a, well, not the best bearish diamond, but we do have one, and 1, 2, 3 gap ups. ठीक है, not well, बहुत नैरो सीपीआर भी नहीं है. अगर अपने लेआउट पे आते हैं, यहाँ पे आप देखो नैरो सीपीआर, यही जो ब्लैक लाइन है, यही वो वीकली सीपीआर भी है, और ये 15 मिनट का डेली सीपीआर. नेक्स्ट, कल का सीपीआर बहुत नैरो है, ठीक है, यू कैन सी इट हियर. एंड फ्यूचर पिवट्स, दैट्स योर S1, राइट? एंड इफ आई प्लॉट, लेट्स गो बैक हियर, इफ यू सी द वीकली सीपीआर as well, so which is 400 points from here, which is also below the monthly CPR. This black line is a monthly CPR. उसका लो टूटना और आवरली CPR का लो टूटना pretty much बराबर होगा, ठीक है? So ये आप ध्यान रखना. मेरा ये कहना है कि मेरे पास अभी फिलहाल कुछ पॉजिटिव नहीं है इंडेक्स के लिए. मे बी इट कम्स बैक टिल हियर अगेन, जैसे मैंने बोला है फ्यूचर्स तक 43,900 इज अगेन, एंड 200-300 पॉइंट्स फ्रॉम हियर इज योर मूविंग एवरेज. मे बी यहाँ तक आके फिर गिरे, वो भी हो सकता है, क्योंकि जब भी देयर इज अ डाइवर्जेंस, इट गोज अप, कम्स टू द EMA देन गोज अप. ऐसा इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. तो ये भी हो सकता है EMA टेस्ट करके फिर गिरे. बट दिस, लुक एट द डेली चार्ट, दिस इज समथिंग दैट यू ऑलवेज वांट टू ट्रेड. ओके, सो जैसे मैंने कहा, this is the plan for Nifty and Bank Nifty. Now we come to some investment stocks, उसको हम डिस्कस करते हैं, and let's wrap it up then. Commodities हम आज नहीं छूते हैं because as I told you that there's a lot of trading view में बहुत errors हैं, so इसीलिए charts अच्छे से खुलेंगे नहीं. In fact, I can see silver has really gone up today, so maybe we get an opportunity next day or something. But अभी के लिए
हम कमोडिटी आज नहीं टच करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स। नाउ इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में हम यहाँ से शुरू करते हैं। मैंने कुछ चार्ट रखा है जो भी हमारे स्कैन में आया था, एंड हम वही डिस्कस करेंगे, एंड विल डिस्कस कि इसका क्या प्लान है और क्या हो सकता है, और हम चार्ट में देखेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो मैं इसको 2 लेआउट पे कर देते हैं हम लोग। In fact, we need the monthly CPR, right? So let's put 3 layouts only. डेली को हम एकदम स्मॉल कर देते हैं, मंथली और वीकली को मेन रखते हैं। ठीक है, सो दिस इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इसमें हेड एंड शोल्डर है मंथली चार्ट में, एंड इट हैज ब्रोकन आउट। नाउ ऑफ कोर्स ये जो रेड टिक आपको दिख रहा है या डाइवर्जेंस दिख रहा है, दिस इज जस्ट 2 days into the month, so इसमें इसका कोई वैल्यू नहीं है। इन द वीकली चार्ट यू कैन सी ये ऊपर गया, इस चेंज इन पोलैरिटी पे हैमर है, इस वीक इसका फॉलो थ्रू भी हो गया, तो इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन गो हायर। नाउ ऑफ कोर्स डेली चार्ट में मंथली सीपीआर के जब तक ऊपर है तब तक अच्छा है, अगर ये ऊपर रहेगा तो बेटर है, मे बी इट कम्स टू द सीपीआर देन गिव्स यू अ ट्रेड, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बट यूनियन बैंक इज समथिंग दैट यू कैन लुक एट कि क्या इसमें ऐसे सेटअप्स I have a question somewhere. You think Diwali week plays a role and gives market a bullish bias? नहीं, मेरे एक्सपीरियंस से ऐसा रहा है कि दिवाली टू दिवाली एक ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस रहते हैं। सो bullish bias, I don't know yaar. I've seen more trading where markets have fallen also. So I'm not sure that I would say that, and in fact I won't even explain any move खाली एक दिवाली का एक्सक्यूज बोल के। सो आई थिंक स्टे अवे फ्रॉम ऑल दैट, स्टिक टू द चार्ट्स। सो यूनियन बैंक, as I said, is one of them that I think can give you a move. Then you have Asian Granito. Now this again has a bullish monthly divergence and it started smooth. शुरू तो हो गया था यहाँ से 54, now it's at 82 something. This is what the plan was कि ये breakout हो गया है, point of interest है, यहाँ से ये breakout हो गया था, change in polarity भी हो गया daily chart में, and you can see there's a daily bearish divergence, results also due. So let that इसको खेलने दो, मतलब EMA तक आने दो, या इसको let it play out and then maybe look at it because it has just started. I think it's got plenty of things to do. Of course guys, remember जब हम investment की बात करते हैं, मैं खाली technical analysis की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, fundamentally वो stock कैसा है, नहीं या अच्छा है या बुरा है मुझे नहीं पता। So you can use various apps that is available जिसमें आपको fundamentals बता देते हैं, आपको ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, और आप उसके हिसाब से फिर अच्छे स्टॉक्स को अच्छे सेटअप के हिसाब से ले सकते हैं। Alright, then you have Kamdhenu. This again is at monthly EMA. There's a bullish divergence. Again, there's an uptick. You want it to go on the upside. Now, of course, we had that last time as well, 0.12 का probability, but it fell down. Again, there's a divergence. So मेरे ख्याल से इसको ऐसे खेलना चाहिए कि एक महीना एक अच्छा white candle बनना चाहिए, बढ़िया सा white candle, and then if there's a follow through on the monthly chart, then you take a position here, rather than using the previous highs or something, because इसमें volume बहुत ज़्यादा नहीं है। Then you have APCL. APCL में आप देख सकते हैं monthly में bullish divergence. There's a kind of a trend line here and horizontal point of interest. इसका breakout हो गया था. Now if this is excuse me, a change in polarity and there's a follow through next week, I think इसको भी देखा जा सकता है. This is a pretty decent setup here as well. Monthly divergence has just started. Okay. Then you have Tasty Bites. I think this is, of course, monthly mein bullish downside, it's gone up. Now it's correcting. Correction mein there is this point of interest gap which was exhausted, so it is testing, which is very interesting because यहाँ पे if you find like a bullish diamond, which we have, very shady bullish diamond, but ठीक है, maybe you can take advantage of this, like a gap का risk पे करने का or something like that. So this is also a very good setup in Tasty Bite. So if fundamentally it's still okay, I think excuse me, maybe you can take a call here. Excuse me. All right, now we have Thyrocare. Thyrocare has a bullish divergence here. It's gone till EMAs, maybe corrects here or goes up and breaks out. So either way, you need to watch out. You need to take care. एक अच्छा महीना जैसे ये hammer है, maybe this level here, which is acting as resistance. अगर ये
मतलब अच्छे से टूटता है, maybe then that is when you can expect the prices to go higher. बहुत लो से मतलब almost bottom से ये bullish divergence बना है. So maybe if things are improving, do your analysis, do your fundamental analysis, just go through the apps, datas रहते हैं वहाँ पे, आप देख लो कैसा चल रहा है इस कंपनी का. अगर अच्छा चल रहा है so maybe सेटअप तो है. Muthoot Finance, bullish divergence went up, came till the EMAs, and now, you know, if it kind of gives you a follow through, this is also a decent place. You can see here weekly chart में divergence तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे gap down था, test again gone back up. So as soon as it kind of exhausts in a daily or a weekly time frame, you can probably take advantage of that as well. So that is another stock that you can keep in your list. ओमेक्स लिमिटेड, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, बुलिश डाइवर्जेंस था, मूव्ड अप मंथली में, अभी भी ठीक चल रहा है, अभी बहुत दिन बचे हैं. अगेन नॉट द बिगेस्ट, यू कैन सी देयर लॉट ऑफ विक्स, तो मंथली चार्ट पे ही टिके रहते हैं, वीकली तक भी जाने की जरूरत नहीं है. मे बी सी हाउ दिस मंथ रिएक्ट, बिकॉज लास्ट मंथ का कैंडल वाज नॉट द बेस्ट, बट अगर कोई 012 हो या अगर इसका हाई तोड़े या आपको वीकली या डेली में कोई डाइवर्जेंस मिले, देन इट्स प्रोबब्ली द बेस्ट थिंग टू डू. Then you have Jubilant Pharmanova, bullish divergence gone up. Let's see इसका retracement कितना हुआ है, 78.6, which suggests good, right? Weekly में भी आप देख सकते हो बहुत अच्छा कैंडल है. आई थिंक मे बी न्यूज होगा, हाँ अर्निंग्स था, look at that, right? एंड मंथली सीपीआर के भी ऊपर है काफी टाइम बाद, सिंस सितंबर, अभी सितंबर अक्टूबर भी निकल गया, नवंबर में मंथली सीपीआर के ऊपर है. सो अगर ये आपको प्रीवियस वीक का हाई टूटता है या कुछ होता है, देन अगेन कुड दिस बी अ 012. मे बी यू वांट टू वेट फॉर नवंबर टू फिनिश, कि नवंबर फिनिश हो जाए और मुझे कंफर्म हो जाए कि ये 012 है, देन आई कैन एंटर इन दिसंबर. दैट इज आल्सो पॉसिबल, बट इसको आप अपनी लिस्ट में रखो. Is my trip at weekly EMA, at monthly EMA, there is a bullish dive on the weekly chart and a 012 as well, right? So, and this again, if you like the stock fundamentally and everything, then maybe next week देखो अगर ये follow through देता है, कुछ prices month के highs टूटते हैं, तब आप इस पे entry ले सकते हो. Again, guys, remember, this is not a tip. Let me reiterate, I'm just a technical analyst. I'm not giving you a tip. I am just suggesting that according to our strategy or setups, these are few of the cash stocks that might give you an opportunity. All right, exchanging solution is one that worked last time. हमने यहाँ पे एक एंट्री लिया था. अगेन ये वीकली ईएमए पे है, डेली में मंथली सीपीआर के ऊपर जा चुका है, वीकली में लग रहा है कि हाँ ये it can go higher. So again, if you like this stock fundamentally, this can be one of your picks. If you're already holding, then maybe this is the time this will start acting up. Then we have Orient Electric. Orient Electric को आप खाली वॉच करते रहो, बिकॉज मंथली में बुलिश डाइवर्जेंस है. यू नीड, अगेन इसका प्लान ये हो सकता है कि एक बढ़िया व्हाइट कैंडल बन जाए और उसके बाद वाले मंथ से हम इसमें कुछ करना शुरू कर दें, बिकॉज यहाँ पे मंथली में बुलिश डाइवर्जेंस है और वीकली में भी एक काइंड ऑफ अ बुलिश डाइवर्जेंस है विच कैन हेल्प यू. आप देख सकते हो मेरा अलर्ट भी लगा हुआ है यहाँ पे वीकली कैंडल के ऊपर, बट बहुत अच्छा कैंडल नहीं है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ इसका. सो 1 month, मे बी नवंबर becomes a good month for this, and then जब तक वो नहीं होता है हम वेट कर सकते हैं, बस इसको लिस्ट में रख सकते हैं. Tide Water Oil, bullish divergence in the monthly chart, right? Gone above the EMAs, maybe it corrects and then goes up. Weekly EMA पे है, all that, you know. So join the dots. Weekly EMA के ऊपर जा चुका है, so हम चाहते हैं कि ये बार अब यहाँ स्विंग लेगा EMA से वापस ऊपर की ओर, तो ये भी आप इसको वॉच कर सकते हैं. Again, you can also draw, in this case, I just noticed, you can also draw this. So maybe if it goes above this, then you can maybe try and enter. Below this, just stay away from it. ठीक है, तो इसको भी हम visibility weekly में भी कर देते हैं and daily में भी कर देते हैं, so that we are aware of it. All right, then we come to Indoco Remedies. Again, इस पे भी bullish divergence बने हुए हैं, लेकिन अभी तक high नहीं टूट रहा है. इसमें भी you want one good white candle and the next month should give you a follow through. उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते. So इसको watch list में रखिए, लेकिन क्या होगा हम देखेंगे. Then you have Zydus bullish divergence 012 maybe, and at weekly we have a daily bullish divergence as well. So this Zydus Wellness, in fact, is your futures maybe here. This could give you a good trade next week as well. Narrow monthly CPR. You just need a follow through above this high. So you could probably put an alert here and
above the high of the week and see how it goes. So this could be a decent setup. Again, you need the momentum in your favor. Nifty बैंक निफ्टी में मुझे अभी तक तो नहीं लगता है कि कुछ bullishness है. अगर कुछ होगा next week या week after that, then we'll take a call. Then we have EPL. EPL at monthly EMA, you have a very shady bullish divergence, लेकिन है तो सही and piercing pattern है. Rejection है higher prices का, so you could probably wait for those levels to break because divergence है. You need the high to be break properly. And तभी आप उस ट्रेड को use कर सकते हैं. So this is another stock that you want to keep an eye out. I've got a lot of green stocks today. Okay, end of month analysis, of course. Anupam Rasayan India, you can see here at daily EMA at monthly EMA. Sorry, last month was a doji. This is engulfing bull, high also broken. Weekly में bullish divergence है, series of bullish divergence in fact, and this is I think the best pick amongst all. For me, for immediate effect, for like कि आप देख सकते हो कि भाई ये कुछ तो है, ठीक है? So keep an eye out for this as well. IEX, keep an eye out for this as well. There is a bullish divergence. अभी तो start ही हुआ है, uptick. Here the high was broken. Still the risk is here. Maybe a dip later, and then you can see this here trend line. Maybe a dip later, and then it'll resume. I don't know. Maybe it'll come back, create a daily bullish diamond, and then resume. I don't know that either. So, but you gotta wait. If you're still holding, you gotta wait and see how it pans out because bullish divergence to hai, and we've all seen bullish divergence of monthly chart mein hota hai. To kya hota hai? Then we come to Hindustan Petrol. Sorry, that is again monthly EMA. There's a weekly shady divergence. We've discussed this, I think. Shady divergence here, a decent candle as well, and above the monthly CPR as well. So this also could give you a trade on the upside. ठीक है? So ये कुछ cash stocks हैं जो हमें trade देखता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. About 19 stocks that we've selected that you should have in your watch list in the month of November. All right. So that's about it, guys. Any stock that I can help you with, please type the name of the stock so that I can help you identify if there's something. Somebody says there's good result in IEX, so there you go. Might turn around. That has also got futures, so which is it can help you trade also. Any stock that you want me to look at, guys, please type the name of the stock, and I'm happy to have a look at it. If you want me to look at any other stock, please do give me a shout. Atul monthly. All right, so we stick to investment time frame and open Atul. Actually, I did look at it. I don't know why I did not put it in the list. So, but let me see. Yeah, I think you need 1 month. Correct. This is why you need 1 month and then maybe. So let me just put it in the green list anyway. But yes, you need 1 month. And if this happens, then probably a good opportunity to enter this stock once again. क्योंकि लग रहा है ये correction stock, corrective wave ही है. So yes, next month. Tata Consumer Product. All right. So Tata Consumer Product monthly is all right. मतलब मुझे कोई complaint नहीं है. I mean, there's still, this month is just beginning. Weekly में bearish divergence था, लेकिन tick down उसका confirmation buffer नहीं हुआ, and there is a probable 012 R1 monthly. Daily chart में there's a bearish divergence went up. It looks like a 012 यहाँ इस level पे बार-बार rejection हो रहा है. So अगर gap down खुलता है, क्योंकि ये engulfing bull बना हुआ है, but on top है, so it's not really that good. I think maybe it won't go up in a very powerful fashion. Might अगर gap down खुला या bearishness Monday को शुरू हो गया, then maybe something that you can look at, worry about as well. Tata Consumer Product. All right. Whirlpool. I think मैंने इसको watch list में है मेरे,
yes, monthly bullish divergence सब ठीक है, यहाँ डोजीज है और यहाँ पे एक bearish divergence है. So I think it might correct a little bit or maybe move sideways for a while and then go higher. But yes, I think monthly bullish divergence है, इसका मतलब मैं ठीक हूँ. Maybe एक दो महीना यहाँ निकाल दे and then बढ़े, I think that is also possible. So I'm just waiting for something to happen here. But Whirlpool is okay. फिर है Tanla. Tanla platforms, of course, bullish divergence goes up, correct still EMA. Again, this is one of the stock that I'm waiting. It's actually in my watch list, जहाँ पे मैं wait कर रहा हूँ कि कोई divergence बने या कोई एक अच्छा candle बने weekly में. Monthly wide CPR है, so I think again this month is going to be a slow month for Tanla. But अगर अच्छा month होता है या अगर ये ऊपर बंद हो जाता है, then I think Tanla will be back in my execution list as well. Okay. Anything else? Any other stock? I think there's only very few stock that is left. I know it's been a long live session because there are a lot of cash stocks that I had chosen to discuss with you guys. And of course, we have about 32 list of stocks that can give you an opportunity. Yeah. Okay. So I'm just waiting कि आपके पास और कोई stock questions है. I don't think so. I think everyone's done. If there is any other stock, let me just put in the chat here. If there's any other stock, I'm happy to answer, but I think we are done for the day. All right. Okay. Let's call it a day, I think. Thank you very much. Have a great, no question. All right. I think we're done with today. सब कुछ हो गया है. आपने अच्छा से आई होप आप समझ पाए हो कि हम कैसे मंथली इन्वेस्टमेंट स्टॉक पिक करते हैं. अगर आपने समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अभी भी यही बोलता हूँ कि अगर आपको ट्रेड करना है कभी भी, अगर आपको इफ यूड लाइक टू ट्रेड, इफ यू लाइक टू एंटर अ पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, देन प्लीज लर्न एंड ट्रेड. मुझसे नहीं, किसी और से, किसी से भी आप सीखो और तभी आप स्टॉक मार्केट के दुनिया में आओ. एंड इफ यू वांट आवर बैचेस स्टार्ट पोस्ट दिवाली के एक हफ्ते बाद 18th को हमारे वीकेंड बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं वापस से. If you're interested, you're more than welcome, of course. Just give us a buzz. Thank you very much. Have a great evening, have a great night, and I'll see you guys next week. Bye bye.